big supporter for the cause of education in Parliament. So I was telling that how did we actually use one opportunity, and immediately there is, so we see a lot of budgetary cover now available, and one result area from that program will be that all the provinces will be coming up with the early childhood education policy of that. Second opportunity, which again, Ms. Bella, if I could, get another attention of you, and a good news for you is that again, this year, while the development planning process was in the pipeline, so we have made the Planning Commission agree on a project which is now included in the PSDP, purely on the early childhood education expansion in the federal territory areas. So this is about a 700 to 900 million program, which will be rolled out in coming 3 years in the capital, because capital में हमारे hardly किसी primary school के अंदर जो है वो कोई prep classes हैं, कहीं वो मुझे बताया गया है कि कोई 1-2 kindergarten वगैरह हैं. सो इस प्रोग्राम के जरिए हम कोई ऑलमोस्ट टारगेट करेंगे 200-250 स्कूल्स को, कि वहाँ पे उस तरह के जो है अर्ली चाइल्डहुड के, या जिस तरह से आप कहते हैं प्रेप के लिए, ऐसे क्लासरूम्स बनाए जा सकें जो उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर सकें. वहाँ पे स्पेशलाइज्ड और ट्रेन्ड जो टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ डील करती हैं, उनको जो है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सके. यहाँ पे हमारी जॉइंट एजुकेशन एडवाइजर और एफडी से हमारा मौजूद है, और इन्होंने और इनकी डायरेक्टर एकेडमिक्स ने इस पे काफी काम किया हुआ है, कुछ मैनुअल्स बनाए हुए हैं. तो अभी दिस इज द टाइम कि उसको हम रोल आउट करेंगे. सो दिस इज अनदर मोटिवेशन कमिंग फ्रॉम the commitment which we have signed this September in the World Transforming Education Summit में जो commitment to action है, so that action is not only on the papers, it's not only coming from speeches. So 2 major interventions which we have taken for providing more financing in the form of restructuring of Aspire and in the form of the early childhood education launch. And now everything is not all about, as you know, financing. Madam Manaz is here, and we have already discussed how harsh parenting and even the way students or the children are dealt within the classes, that affects their cognitive abilities and that affects their learning abilities. तो इन्होंने जो काबिज की और जो इस साल फेडरल टेरिटरीज में कैपिटल पनिशमेंट के हवाले से जो लॉ अप्रूव किया गया, उसके रूल्स जो है वो अप्रूव किए गए हैं, और अभी रिसेंटली मैडम और मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया है. तो अगेन दिस इज अ वे, ये लॉ सिर्फ वो इस बात के लिए नहीं है कि बच्चों को मारा ना जाए, इसलिए मारा ना जाए कि उनकी जो फाउंडेशनल लर्निंग है या उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है या उनके लिए जो एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए कि जिसमें वो तेजी से लर्न कर सके. और जैसे मैं अभी हम बात कर रहे हैं मैडम को, हम ये कहेंगे कि ये तो स्कूल्स की हद तक होगा, बट दिस इज रिक्वायर्ड इवन बियॉन्ड द स्कूल्स. जैसे मैंने कहा, हार्श पेरेंटिंग इज आल्सो एन एरिया जो हमें किसी ना किसी वक्त जो है उसको एड्रेस करना पड़ेगा बच्चों की सोशल इमोशनल स्टेबिलिटी को देखते हुए. एंड नॉट ओनली दिस, वी ऑल नो कि ये फाइनली ये कहाँ जाके रुकती है ये चीज, कि ये जितने बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल होते हैं, जो आ ही नहीं सकते, जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो लर्निंग क्राइसिस का शिकार है और लर्निंग पॉवर्टी, ये सारे अल्टीमेटली ये गरीब बच्चे हैं, ये रूरल एरियाज के बच्चे, और इनके अंदर भी जेंडर की तादाद और भी ज्यादा हो जाती है. तो इसलिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्लूसिविटी इनटू इट, अनदर जो लेजिस्लेशन फेडरल गवर्नमेंट में पास की गई है, आई थिंक वो भी बड़ा क्लियरली रिलेट करती है इस लर्निंग क्राइसिस के साथ, एंड दैट इज रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ डिसलेक्सिया बिल. तो डिसलेक्सिया बिल के बारे में अभी बहुत कम अवेयरनेस है, हम इसकी जो है वो लॉन्च करेंगे
कि फेडरल गवर्नमेंट हैज कम अप विद लेजिस्लेशन कि जिसमें बच्चों को अर्ली ऑन डायग्नोस्टिक्स की जाए स्कूल्स के अंदर और देखा जाए कि इनकी स्लो लर्निंग की रीजंस क्या हैं। वो डायग्नोस्टिक टूल्स उनको जो है उनके ऊपर ट्रेन किया जाए टीचर्स को, ताकि वो स्लो लर्निंग वाले बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके लिए फिर रेमेडियल थेरेपिस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा सके। उसके लिए एक रेमेडियल या शॉर्ट करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सके। Yeah. So that is again an area where the federal government has come up with a policy initiative which will actually address this learning crisis. So having said all that, मैं finally इस पे end करना चाहूँगा। This is a very tall order. It's something जो हम करने जा रहे हैं, ये हमारी सिर्फ बच्चों की पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करेगा, बल्कि उसके नतीजे में ये बच्चे जो है वो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव सिटीजन्स बनेंगे और इसी के नतीजे में जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जीडीपी की ग्रोथ के चैलेंजेस हैं, एम्प्लॉयबिलिटी के चैलेंजेस हैं और सोशल जस्टिस के जो इश्यूज हैं और जो इंक्लूजन के इश्यूज हैं, ये सारे इन चीज़ों के साथ रिलेटेड है। We have signed the commitment, and we, as someone who's leading this initiative, both as official as well as in my non-official capacity, I would urge all of you to sign this commitment of action, all organizations sitting here, and you should become a torch bearer. That is why we call it a movement. So unless everyone joins this platform and brings his or own expertise in different areas, only then we can make this happen. Thank you very much. movement से कम बात नहीं भरेगी और the fact that you will actually establish hope for easy at low family level, but also for careers. Parliamentary Secretary for Law and Justice Ministry, and of course, a very famous and well-known convener for the Parliamentary Caucus of Child Rights and the Global Chair for IPNNE8. And I think this whole global aspect, the national aspect, and of course, her work on the ground speaks volumes. And I really apologize because we got lost as she came, and therefore, not that she was not going to come on time, but thank you so much, Mehnaz, for being here and gracing this program today, jahan pe hum aaj call kar rahe hain. And recently, as you must have known, that a couple of days ago, we've had the launch of the rules for corporal punishment, banning corporal punishment in the Islamabad capital territory. So I think that also paves the ground. और बल्कि उसको देखा देखी अब हम देख रहे हैं कि सिंध में भी आज इसी वक्त हो रहा है, इसीलिए डॉक्टर फौजिया वहां से नहीं आ सकी. But I'd like to call upon Mr. Sajjad Khan, Mr. Rahman Shah, the Secretary, School Education Department, Gilgit-Baltistan, who's here. He has a short presentation that he wanted to share with us. And again, I would like कि हम focus करें कि हम assessments कैसे, अगर हमें foundational literacy तक पहुंचना है तो हमारी assessments कैसे होंगी? How do we agree on a consensus to assess so that we know we are doing it better and we can keep improving it? So over to our Secretary Sahab, Rahman Shah Sahab from Gilgit-Baltistan. Shukriya for coming over to this event today. And if our teams can help with the presentation. Mike, please. Sir, थोड़ा सा करीब से. जी, thank you.
वहाँ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं दैट आर वेरी क्रिटिकल इम्पोर्टेंट. उन बच्चों की क्रिटिकल एज के दौरान व्हाट द गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए स्कूल एनवायरनमेंट में हमारा क्या रोल हो सकता है और क्या रोल बनता है. ये स्टडीज ने साबित कर दिया है. जो इंटरनेशनल नेशन स्टेट्स हैं उन्होंने तो इस हद तक बच्चों की निशुमा के ऊपर काम किया हुआ है कि वो व्हेन दे आर इन, अपने माँ की पेट में बच्चा होता है तो दे स्टार्टेड टू गिव देम द एनवायरनमेंट कि वहां से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो. अच्छा अलार्मिंग कि हम बॉटम से पहले दूसरे तीसरे नंबर पे हैं. तो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा. कुछ इनिशिएटिव हमने गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लिए हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. मैं भी कि एक ये हेल्पफुल हो हमारे लिए, जिससे हमने पिछले एक आध साल में इसे विजिबल इम्प्रूवमेंट देखी है. तो थैंक यू वेरी मच. तो ये माइक क्लोज करना पड़ेगा. ये आवाज आ रही है आपको मेरी? दिस इज द लैंडस्केप ऑफ जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एजुकेशनल ओवरव्यू है. जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैं एंड देन उसके अंदर इनरोलमेंट और टीचर्स की तादाद. नेक्स्ट जो इनिशिएटिव्स हैं, जो गर्ल्स एजुकेशन गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने टॉप प्रायोरिटी पे लिया हुआ है. और स्पेशली हमारे उधर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन की पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, वेलकमिंग नहीं था, एनवायरनमेंट ऐसे नहीं थी कि जहाँ पे उनको प्रमोट या अच्छी तरीके से एजुकेट किया जाए. लाइक इन डिस्ट्रिक्ट दियामर, वहाँ के जो एजुकेशन इंडिकेटर्स थे हमारे, वो पूरे जीबी को अदरवाइज भी डिस्टर्ब कर रहे थे क्योंकि बड़े लो और पुअर इंडिकेटर्स थे. तो उस पे एक अफर्मेटिव एक्शन हमने एक अपने एडीपी के बेसिस पे विद हेल्प ऑफ पार्टनर्स हमने वहां पे होम बेस्ड स्कूल एजुकेशन कर दिया. उस पे एक घर के अंदर जो लेडी पढ़ी लिखी थी, एक कमरे के साथ एक टीचिंग मटेरियल के साथ उनको हमने उनको इनरोल किया और अपने सिस्टम में लेके आए, उनको सैलरी दी और ताकि वो अपने नेबरहुड जो के बच्चे हैं, उनके बच्चियां हैं स्पेशली, उनको लाके एजुकेट किया जाए. स्पेशली इन दियामर में दारेल तांगीर के अंदर, रिमोट एरियाज के अंदर. तो वो एक स्टेप हमारे लिए एक बड़ा अच्छा साबित हुआ. और अभी करंट उसकी तादाद हमने भी स्टार्टेड एज 25 स्कूल्स. अब वो 121 स्कूल्स हमारे हो गए हैं, जिससे हमारी गर्ल एनरोलमेंट है, जो फीमेल जो यंग हमारी गर्ल्स हैं, वो तकरीबन 6000 से अबव है वहाँ पे एनरोलमेंट. इसी तरह हमने जो स्कूल मील प्रोग्राम स्टार्ट किया है विद द हेल्प ऑफ आवर पार्टनर एनजीओज. हमारे वहाँ पे यदि बडलीमा पाकिस्तान के अंदर भी है कि बच्चों को अट्रैक्ट करना, रिटेन करना स्कूल्स के अंदर इज अ चैलेंजिंग टास्क. और स्पेशली जहाँ पे पॉवर्टी लेवल सबसे ज्यादा हो, पॉवर्टी चैलेंजेस हो. तो हमने देखा कि मिक्स सर्वे हुआ था, मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे यूनिसेफ की तरफ से. वहाँ पे स्टंटिंग प्रिवेल कर रही थी 45 एंड अबव रेशो से हमारी चिल्ड्रंस के अंदर. एक इस चीज को एड्रेस करने के लिए. दूसरा, हमने वहाँ पे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में उनको रिटेन करने के लिए स्कूल मील प्रोग्राम लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ अल्लाह वाला ट्रस्ट. अब ये पिछले कोई 6 महीनों से ये स्कूल मील प्रोग्राम चल रहा है 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. तो वहाँ पे हमारी जो रिटेंशन है स्टूडेंट्स की,
وہ بڑھ گئی ہے, اسپیشلی ان پرائمری اسکول. تو اٹ ول سپلیمنٹ آگمنٹ ہمارا جو فاؤنڈیشنل لرننگ ہے, جس کے اندر نیچرلی جب ایک ینگ چائلڈ کسی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھتا ہے اور وہ بھی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں, تو لرننگ اس کی الٹیمیٹلی اس کا جو کاز آف لرننگ ہے وہ تو اس کے اندر ہو جاتا ہے, وہ سرو کرتا ہے. تو اس سے ہماری بڑی ایک امپرومنٹ ہوگی. اینڈ اگین ٹو ایڈریس دا ایشو آف جو ہمارے میکر اسپیسیز ہم نے بچوں کے ادھر 50 اسکولس کے اندر ہم نے کر دی ہیں, ان کی انوینٹیو جو اسکلز ہیں وہ ان کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ساری جو چیزیں جو پروونشل گورنمنٹ کی ہماری ہے کہ وی آر ٹرائنگ آور لیول پہ, اسٹل وی آر لیگنگ بیہائنڈ. ابھی which needs a call of action, ایک نیشنل پلان بن سکے ہمارا, جس پہ ہم یہ نیشنلی فیڈرل لیول پہ ہماری پالیسی گائیڈ لائنس ہو کہ فاؤنڈیشنل لرننگ کو ہم کیسے اسٹرینتھن کر سکیں. اب ECD ایجوکیشن آ گئی, ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ایک ادارہ ہے ہمارے وہاں پہ, روپانی فاؤنڈیشن, بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اب اس ماڈل کو لے کے چلنا ہے ہم نے, وہ بڑا ماڈل جو ہے جو ہمارے گورنمنٹ لیول پہ اس کو لے کے چلنا, کس حد تک ہم ریسورسفل ہوں گے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے کہ ہم تمام جو اپنے بچے ہیں گریڈ 1 to 3 وہ ہم دے سکیں, یا پھر ہم ایک الٹرنیٹیو ماڈل جو ہم اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ہم بنائیں. یہ بھی بنانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا چیلنج تھا کہ بچوں کو آؤٹ آف اسکول بچوں کو لے کے آنا. اب اٹس این مکس اپروچ, جیسے اس طرح کے انٹرونشنز کیے جائیں کہ بچوں کو ایک تو اسکول کی طرف ان کا رجحان بڑھ جائے, دوسرا ان بچوں کو وہاں پہ اسکول کے اندر ایک انیبلنگ لرننگ انوائرمنٹ ہو, جس سے ہمارے یہ جتنے بیسک اسٹیٹسٹکس یا انڈیکیٹرز جو ہمارے ہیں جو نیچے سے ہم ٹاپ کر رہے ہیں وہ ہم امپروو کر رہے ہیں. تو یہ اگست فورم اس لیے بنا ہے, یہاں پہ ہمارے فیڈرل سیکرٹری صاحب نے بھی بتا دیے جو گریوٹی آف جو ہمارا جس ایجوکیشنل کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ جو فنڈامنٹل ہے ایجوکیشن کا فاؤنڈیشنل لرننگ, اس کے اوپر جب تک ہماری نیشنل اسٹریٹجی نہیں بنے گی اور نیشنل اسٹریٹجی کے ساتھ اس نیشنل اسٹریٹجی کو ہم امپلیمنٹ نہ کر سکیں, اس کو کرنے کے لیے پھر ریسورسز بھی ہو, تاکہ فیوچر کے لیے جو ہمارا فیوچر جنریشن جس سے وابستہ ہے اس کے لیے ہم ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دے سکیں. تو ود دس میں ایک دفعہ پھر میڈم بیلا رضا اور تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ they bear me and on this. Thank you very much. بہت شکریہ سیکرٹری صاحب. I think 2 points really emerged. One is that foundation learning, we keep thinking there are courses we need to assess. We need to have programs, but school needs programs. Stunting नहीं होगी, so early years में learning और foundation learning नहीं होगी. We're not paying enough attention to this issue, and I'm glad you were joining hands over there in front of partners as well in Pakistan. And the second call for action is एक strategy हो और strategy के साथ measurement tools हो, so definitely foundation learning will get a lot more action. And we're hoping that the Aspire program will definitely help. After all, we're taking a loan. All the people of Pakistan, for the children of Pakistan, and I hope something really great will come out of it. I'd like to call upon Dr. Manswari Tulsai. I know she was the first one to come and has been waiting and will have to leave.
उसकी जो assessment modalities है, are they well aligned to the foundation learning? And if not, what can be done? And what can be the role that the National Curriculum Council will play in the way recently, as it has been building consensus to be able to take forward? And we definitely like to have a sign-off from the National Curriculum Council participating in this also. Any other mic? I want to thank everyone who's here. It's so important. जहाँ से भी आए हैं, हर तंजीम से ये सब लोग जो हैं ये बिल्कुल हीरे हैं, नादिर हैं, to be able to help us in the consensus building process. बहुत शुक्रिया the audience and the panelists. जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम आपको मेरी thank you very much Madam Bela Jamil and all the respected honorable participants. जैसे सेक्रेटरी साहब ने गाइड किया, हमने नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान में इसको बहुत अहमियत दी है, फाउंडेशनल लर्निंग को पर्टिकुलरली। जब ये नेशनल करिकुलम पर काम स्टार्ट हुआ था तो अर्ली इयर्स को देखा गया था एज अ 1 year program. As you saw in the presentation earlier that Article 25A years 5 to 15 बात करता है, जिसमें आपके अर्ली इयर्स वाले बच्चे जो कि 3 साल के या 4 साल की उम्र में हैं वो कवर नहीं होते, लेकिन हमारी जो लॉज बने हुए हैं उसमें 3 out of 5 यानी कि सिंध, पंजाब और ICT में अर्ली इयर्स के लिए भी वो अप्लाई करता है 25A. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि पूरे पाकिस्तान में हम अर्ली इयर्स पर फोकस दें क्योंकि फाउंडेशनल लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू नोट बिकॉज पाकिस्तान में बच्चों का हर साल जो कोहर्ट पैदा हो रहा है वो पिछले साल से ज़्यादा बड़ा है. तो जितने आपके स्टूडेंट्स डिफरेंट एज ग्रुप्स में हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में सबसे छोटे बच्चे हैं. तो अगर आपने एक मुल्क का पूरा ट्रेजेक्ट्री बदलनी है और आप अर्ली इयर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, जैसा कि अक्सर स्कूल्स में होता है कि जो टीचर ज़्यादा काबिलियत रखता है तो उसको बड़ी जमातों पर लगा दिया जाता है और छोटी जमात के लिए पढ़ाना एक तरह से डिमोशन समझी जाती है. हालांकि छोटे बच्चे को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू बड़े बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि छोटा बच्चा ना तो इस बात की कैपेबिलिटी रखता है कि वो अपने आप को असेस कर सके कि उसको समझ नहीं आई, ना ही वो कम्युनिकेशन रखता है कि अगर उसे नहीं भी समझ आई तो वो एडिक्वेटली कम्युनिकेट कर सके. तो लिहाजा अर्ली इयर्स पर फोकस करना नेशनल करिकुलम काउंसिल के लिए बहुत अहमियत रखता है. और जब हमने 2021 में पहली से अर्ली इयर्स से 5वीं तक प्राइमरी ग्रेड्स का निसाब अपडेट किया तो हमने अर्ली इयर्स का निसाब सिर्फ 1 साल की बजाय उसको ऐसे एक्सपैंड किया कि वो 2 साल पे भी पढ़ाया जा सके. और जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में कई जगहों पे अर्ली इयर्स 3 साल के लिए भी पढ़ाई जाती है, वर्ल्ड वाइड भी 3 साल पे पढ़ाई जाती है. तो हमारा निसाब इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि अगर कोई सूबा उसे 1 year पे पढ़ाना चाहे, सिंध जैसे 2 सालों पे पढ़ाता है, या अगर कोई उसे 3 सालों पे पढ़ाना चाहे तो उसको कवर करता है. दूसरी बात उसमें यह है कि अभी कल ही हमारी इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिधर मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने बहुत फोर्सफुली इस बात को सारे सेक्रेटरीज के सामने रखा कि जब तक आप एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं बनाते और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के तहत उस इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को डेवलप करके फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक वी कैन नॉट क्लेम कि वी हैव डन एनी करिकुलम रिफॉर्म्स. तो एक चीज जो उसमें बहुत अहमियत रखती है वो ये है कि एक क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज हो. मिसाल के तौर पे सिंध ने अर्ली चाइल्डहुड पे बहुत काम किया हुआ है जो कि हम बाकी सूबों में लेकर जा सकते हैं. सिमिलरली देयर कैन बी, जैसे कुछ सूबों में अर्ली ईयर्स पर लॉज एग्जिस्ट करते हैं, बाकियों में नहीं है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है. सो देयर कैन बी गाइडेंस और उसमें नेशनल करिकुलम काउंसिल कैन प्ले दैट रोल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज. सो विद दैट आई कैन conclude with saying that National Curriculum Council can make this commitment today
कि ये जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बन रहा है अंडर द नेशनल करिकुलम काउंसिल, इसमें वी विल डेफिनेटली टेक अप द एजेंडा ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग इन द सेंस के दोज प्रोविंसेस दैट हैव नॉट करंटली मेड इट अ लॉ, उनको भी सपोर्ट किया जाए, और जिन प्रोविंसेस में ये लॉ तो एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्चुअल उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप्स की जरूरत है। जबकि हमारा कोर करिकुलम तैयार हो चुका है तो उसके अगले 3 वर्टिकल्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स के बाद आते हैं, मिसाल के तौर पे लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स और असेसमेंट्स, उस पर भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरीम चंदाई। I think this is so helpful again, focusing and can we draw on your assessment teams, the 3 verticals that you are talking about, so that the group aligned, तो हम उनके से improve कर सकते हैं, we can have a proactive meeting, and this interprovincial coordination mechanism of the NCC is extremely useful. But with that, also the ITA study PPT, but maybe Wasim Saab can further take that up. And I'm looking at your areas as well. How do we see this movement taking shape, owned by the government, led by the government, with lots of partners who can participate in it? We have with us our Additional Secretary of Education, who is the Chief Secretary. As you know, he's now created a new cadre of people in Gilgit-Baltistan who work under the Chief Secretary. So just to focus, how can we see that voice also at that level, at the highest level of the bureaucratic for foundation learning? We have a short time, so please. Thank you, madam. First of all, I would like to thank ITA for providing this energetic forum. Since we all are here for a greater national cause, we are here for the voiceless children who need change. We are here for the forgotten children who need learning, and for the marginalized children who definitely, if given exposure, they can make miracles in their lives. So foundational learning is basically, if I unpack it, is learning for literacy and learning for numeracy, if I categorize in separately. The age bracket, where particularly if I talk about the public sector education, students are sent to schools in the age of 5 to 6, and they are enrolled into class 1 directly, where they already lack 3 years learning, which remains lacking throughout their academic journey up to grade 4, 5. They feel that they are unable to cope with the academic standards, and definitely they go to the row of dropouts. So there are multiple things which have directly or indirectly linkages with these foundational learning. And unfortunately, in our country, we are unable to cope this very fundamental thing, and we are expecting that our students, after graduating from colleges and universities, they will do wonderful things. It's like कि हम ऐसी जगह से शहद निकालना चाहते हैं जहां मक्खियां ही नहीं है, because they have the fundamental learning, they are deprived of that, and then they are proceeding, and they are going through the certification process, and they are completing that, and then when they are entering to job market, they remain unemployed, and the whole country suffer in this phenomenon. So in Gilgit-Baltistan, all over the voice is about education. Particularly, I would name the Chief Secretary, Mr. Mohyuddin Wani, who has dealt education not separately as a sector, rather it has dealt in an overlapping mechanism with all the departments. We have other departments within that are brought within the ambit of education. Like if works department is there, we integrate their expertise in constructing school building. Like if we talk about the primary school building, we have mostly the building consists of 3 classrooms, and which are specifically allocated for class 1 to 3. But now what we have done to include this ECD and that classes, we have made a policy that
our primary schools will be consist of 6 classrooms, where we will make ECD classroom, pre-primary 1, 2, and 3 before class 1 is mandatory part. So foundational learning, likewise, we have introduced libraries in schools. Even we have engaged district management to introduce libraries in primary schools. We have digitized primary schools and middle school, like our secretary talked about. And now, a recent movement for this enhancement of readership, foundational literacy and numeracy, we have made a plan to educate the parents, because the harsh parenting, as the word the federal secretary talked about, that also impacts the learning of the students, because they don't get exposure at home, and definitely if they are given not opportunity to work at school, definitely that suffers. So what we have done, we have introduced community libraries in colleges in the evening shift, where we are providing platform to the parents who will come with their kids, and then those parents who are able to read, we will provide with books, and we will enhance counseling to motivate them towards reading. And those who can't, then we have kept smart screens there. We play different documentaries and all that, and that is a nice model which will directly deal with this parental education, and through that we are planning to enhance, engage the parents in the literacy of their children. So there are many things to talk, but the time constraint is here. And again, I thank you, Madam Bella Jamil and Idare Talim Wagahi and everyone here. Thank you. बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब. I know that there is a taking place in Pakistan, and while I do expect this one we are also looking at aspects which will be from low tech to high tech and low tech, especially for foundation university. We need to look at other aspects too. Garudan Sahab is the director from the Directorate of Curriculum Assessment and Research in Jamshedpur, in the Education Literacy Department. और खासतौर पे आए हम चाह रहे हैं कि बहुत सारी assessment के initiatives चल रहे हैं, and I don't know all the credits में और बहुत सारा काम होता है, looking at grade 4, grade 8, etc. But what about learning? How do we look at assessments from the Dakar and SELT perspective when it comes to foundational learning, looking at early years? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेहरबानी सैयदा बेला रज़ा जमील और जितने भी गेस्ट हैं उन सब की मेहरबानी. अस्सलाम वालेकुम. हमारी डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च का काम है करिकुलम डेवलप करना, असेसमेंट करना और रिसर्च करना. करिकुलम हमने पूरे डेवलप किए हैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक आफ्टर 18th अमेंडमेंट. उनके टेक्स्ट बुक भी बन गए हैं, मैट्रिक तक सारे टेक्स्ट बुक आ गए हैं और फर्स्ट ईयर के आ गए हैं. अभी फर्स्ट ईयर के कुछ टेक्स्ट बुक रिव्यू हो रहे हैं. असेसमेंट का मैं आपको करिकुलम हमने नॉन फॉर्मल का भी करिकुलम बनाया है. पैकेज ए से लेके पैकेज ई तक मुख्तलिफ उसमें जो है ना वो स्टेक होल्डर थे उनके साथ हमने जो है मिलके बनाया है. असेसमेंट जो हमारा मैंडेट है वो है ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8. इस मैंडेट के अलावा हमने पीआरपी के साथ पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट जो था उसके साथ और एसआरपी के साथ रीडिंग पे अर्ली ग्रेड रीडिंग पे काम किया था, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे. वो भी उसके असेसमेंट टूल भी हमने शेयर कर दिए थे पूरे इदारा तालीम आगाही को, टूल शेयर किए हैं. और असेसमेंट हम ने जो 3 की है, 5 की है, 8 की है,
थ्रू पेपर पेंसिल की है, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट आया है सिलेक्ट प्रोजेक्ट, उसमें जो है वो जुलाई से उस पे काम शुरू होगा। वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक वो अर्ली ग्रेड रीडिंग पे वो काम करना चाहते हैं। और उसमें अभी पूरी प्लानिंग हो गई है, पूरा पेपर वर्क हो गया है, और सिंध जो है ना वो लीड कर रहा है। और सिंध ने ये भी लीड किया है सैयद सरदार शाह साहब ने, तो टीचर्स की लाइसेंस की पॉलिसी जो है ना वो अनाउंस कर दी है। और 60,000 टीचर्स जो है पहली मर्तबा सिंध में जो है ना अपॉइंट किए हैं। जितने भी स्कूल थे वो स्कूल जो है ना वो माना फिल कर दिए, और क्लोज जितने स्कूल थे वो क्लोज, सेक्रेटरी साहब वो क्लोज स्कूल जो है वो ओपन हो गए। तो ये सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब की जो है ना वो सिंध के लिए एक जो है ना वो उन्होंने स्लोगन दिया था, पढ़ेगी सिंध तो बढ़ेगी सिंध, उन्होंने स्लोगन दिया था। तो असेसमेंट पे हम काम करना चाहते हैं। फाउंडेशन लर्निंग पे हमने इतना काम नहीं किया, लेकिन हम जो अभी सिलेक्ट प्रोजेक्ट के थ्रू जो जा रहे हैं तो उसमें फाउंडेशन पे भी हम काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो भी काम होगा मिलके करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अच्छा, एक मैं जो बात भूल गया, एक इंस्पायर प्रोजेक्ट की जो बात हुई, अभी हमने 4 जो लेगिंग डिस्ट्रिक्ट बिहाइंड हैं, स्पेशली उमरकोट, मिट्टी, शहीद बेनजीराबाद और दादू, उसमें हमने 360 टीचर को जो है वो ट्रेन किया है थ्रू द सेस्ला प्रोजेक्ट। जो असेसमेंट किस तरीके से की जाए, स्पेशली थ्रू द एसएलओज, वो जो असेसमेंट की जाए, वो उसके 3 फेस हमने रखे थे। फेस 1 में 4 दिन हमने उनको ट्रेनिंग दी थी। फेज 2 में हम जो है ना उनके स्कूल विजिट किए थे। आज और कल उनका आखिरी दिन है। वो फेज 3 फिर फॉलो अप के लिए गए हैं। तो हम इंस्पायर प्रोजेक्ट के थ्रू भी ये काम किया है असेसमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक segue for a very short statement that we would request from Surya from the Pakistan Institute of Education. ये उन्हीं बताने को बहुत बड़ा काम है कि हम इसकी टेक्नोलॉजी कैसे बनाएंगे, हम मैपिंग करते हैं कौन क्या कर रहा है इस एरिया में, ताकि जो पाए का मैंडेट है, how do we see PIE playing a role in this consensus building process? Manners for the remarks, to this audience. Child rights for जीते हैं। थैंक यू वेरी मच बेला। ये हमारी एक सर्कुलरेटिव एफर्ट थी पाए की और ITA की, और इसमें एक बड़ा अच्छा जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से, सेक्रेटरी साहब ने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके इकट्ठा काम करने का मौका दिया, और उसमें पाए ने जो रोल अदा किया, जो अभी आप फरमा रही थी कि क्या हम रोल अदा कर सकते हैं, तो हमने एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आए, और उस सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमने कलेक्टिव एफर्ट के साथ बहुत बेहतर रिजल्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो जीरो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रोजेक्ट है ICT के हवाले से। एक अभी रिसेंट जो हमारा नेट हुआ है, जो एक रेगुलर एक्टिविटी है, ये 18 और 19 मई को हमने कंडक्ट किया है। तकरीबन ये 26,000 स्टूडेंट्स को उसमें हमने असेस किया है 4th और 8th ग्रेड के। इसमें हमने इंश्योर किया, और सेक्रेटरी साहब का चूंकि विजन था कि फाउंडेशन लर्निंग का भी जो टूल है उसको के जरिए उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, तो हमने उसकी ट्रेनिंग बाकायदा करके और ये इंश्योर किया कि वो भी साथ ये हम असेसमेंट उसकी भी करें, और उसकी सर हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ उसकी एनालिसिस और रिपोर्टिंग अच्छी हो, उसकी डिसेमिनेशन भी बेहतर तरीके से हम इस दफ़ा कर सकें, और तमाम जो प्रोविंसेस हैं और जो दूसरे हमारे यूनिट्स हैं वहाँ हम उसको सेपरेटली भी लॉन्च कर सकें, ताकि सेंसिटाइज हो सके ये एरियाज। और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह से ये एक एफर्ट है जिसमें 2 दिन हमारी पूरी टीम बैठी है, जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स आए थे उनके साथ, ताकि कंसेंसस बिल्ड हो सके, और आज ये और कल का प्रोसेस ये कंप्लीट करेगा इंशाल्लाह। तो एक तो हम ये सर चाह रहे हैं, जिस तरह से वर्किंग हमने शुरू की है, कि जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि
पाए जो है वो हब बने, और जो सपोर्ट हम गवर्नमेंट की तरफ से दे सकते हैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स हैं उनको पाए की तरफ से, और एक ऐसा यूनिट हो जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके जो हम रिजल्ट्स लेना चाहते हैं वो हम ले सकें, और ना सिर्फ उसको हम कंडक्ट करें, उसके प्रोसेसेस को रिफाइन करें। जैसे कल एक जो सेशन था इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उसमें डाटा स्टैंडर्डाइजेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एफर्ट्स है, इसी तरह से हम जो असेसमेंट के हवाले से भी जो तमाम प्रोविंसेस और दूसरे यूनिट्स हैं उनको साथ लेके इंशाल्लाह चलेंगे। और ये इस तरह के कंसल्टेटिव मीटिंग्स हैं जिसको अभी एफसीडी और वर्ल्ड बैंक कर रहा है, इसको हम इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से रिफाइन करके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। So that we can actually put everything together. किस तरह से measurement can also provide leadership for that. ताकि हम लोग इसको plan out कर सकें and then agree on something. It becomes easier that output plans and सब कुछ है वो सब आसान it's my honor and pleasure to call upon Rana Secretary Saiba, who is leading many platforms, but the point is her heart is in a very passionate spot for action. And I think that's what we need. Because foundational literacy or numeracy तो बुनियादी तौर पे बच्चों के हकूक जो है वो उससे टोटल महत्व हो जाती है। और जो हम देख रहे हैं असर के रिजल्ट्स में हर साल ट्रेजेडी देख के थोड़ा सा बढ़ते हैं, सात सीढ़ी की तरह आ जाते हैं, वो जब तक हमारे में सोशल इमेजिनेशन में, घर की इमेजिनेशन में, स्कूल की इमेजिनेशन में, सिस्टम की इमेजिनेशन में ये अहमियत नहीं होगी और children have to break free, learning well and be happy. I think कुछ नहीं हो सकेगा। तो over to Manas. Thank you so much. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's a very good feeling. It's a great feeling to be amongst the people who I admire and who have been a constant source of support for the last 20-25 years. हमने सब ये इकट्ठे किया है। जब बेला कह रही थी कि ये महनाज ने किया है, ये सब कुछ ऐसे हुआ है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप सब ये जो चाइल्ड राइट्स कॉकस पार्लियामेंट में बना है, मैं नाम लेके, अब इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं नाम लेके क्या बताऊँ आपको। ये चाइल्ड राइट्स कॉकस इज योर ओनरशिप। मैंने आप लोगों के साथ काम किया है और आज मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कैसर आलम साहब को। मतलब ऐसे लगता है कि 3-4 जिंदगियों से तो उनको मैं जानती हूँ और पेशावर में बड़े खाने भी उन्होंने मुझे खिलाए हैं। और बेला एंड वसीम साहब, ही मेक्स एवरीथिंग हैपन। और मतलब सारे जो राउंड बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं ख़ास तौर पे मरियम बरकी का जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि आज से 30 या 25 साल पहले जब एक कमरे में मैंने अपने एनेक्स के एक कमरे में CRI चिल्ड्रंस रिसोर्सेज इंटरनेशनल शुरू किया था, तो मरियम वाज द फर्स्ट वन Iram was the first one to, Iram Barki, Iram was the first one to join the team. और इन्होंने टूटा हुआ कंप्यूटर होता था बाय द वे हमारे पास, और वो फिर आगे बढ़ के एक पूरी एक मूवमेंट बना और एक पूरा कैंपेन बना। तो इसमें and the journey is continuing. तो मैंने क्या सीखा? I've been at that side of the fence and I'm at this side of the fence now. और नसरीन मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। नसरीन has been my right hand। अभी जब हमने corporal punishment का पूरा एक launch कराया है, which is again become a prohibition of corporal punishment, which is directly related to the well-being of children,
तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और जो स्कूल था F10 का, उनकी प्रिंसिपल ने और सारे पार्टनर्स ने मिलके दे मेड इट पॉसिबल. तो वी आर ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एस्टैब्लिश हियर कि जो मैंने पार्लियामेंट में आके सीखा कि कोई एक बंदा कुछ नहीं कर सकता. वी ऑल हैव टू बी टुगेदर, और किसी को एक को वो नहीं जाता, क्रेडिट नहीं जाता. हमने सबने मिलके करना है, हमने सबने मिलके ये इस चीज को आगे बढ़ाना है. सो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. कुछ जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है, 25 साल से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का झंडा मैंने भी पकड़ा हुआ है, और पार्लियामेंट में वो झंडा जो था, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बिल्कुल एक छोटी सी चीज बन जाता है, तो फिर आप जब होलिस्टिकली देखते हैं तो वो चाइल्ड राइट्स बन जाता है, एंड दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स. अच्छा, चाइल्ड राइट्स में अर्ली चाइल्डहुड में 2-3 चीजें क्या बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये है कि सेफ एनवायरनमेंट हो, आपका टीचर बहुत अच्छी हो, और आपके पेट में नाश्ता हो. न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है इन दीज टाइम्स. करिकुलम वगैरह बहुत सेकेंडरी है, और बच्चे का खुश होना, और आप उसको कुछ भी सिखाएं, रंग सिखाएं, नंबर सिखाएं, ब्लॉक सिखाएं. फिनलैंड में मेरा जब बेटा ट्री हाउस जाता था तो उसके साथ फॉरेनर उसके बच्चे पढ़ते थे, तो मुझे पता चला स्कैंडिनेवियन कंट्री और फिनलैंड में ये जुर्म है कि बच्चे को 5 साल की उम्र से पहले पेंसिल पकड़ाई जाए. तो बात यह है कि ये हमारा सीखने का अमल, हमें पढ़ने को और अर्ली फाउंडेशनल लर्निंग को बिल्कुल अलग करना होगा. यानी कि टेबल्स सीख रहे हैं, वर्कशीट्स कर रहे हैं, ये सब चीजें बिल्कुल अलग करनी होगी. हमने उस बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक अच्छी खुशहाल एनवायरनमेंट, बच्चा चले लेट्स अस्यूम बच्चा घर में क्या देखता है. बच्चा घर में वो टीवी में जो सारा दिन टॉक शोज हो रहे हैं, फिर इतनी टेंशन है, इन्फ्लेशन इतनी हाई है, इतनी टेंशन है, वो जो बच्चा खाना चाह रहा है उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है. मतलब ये सारी चीज जब हम उसको एक इन्वायरमेंट में लेके आए जिसकी आज हम एडवोकेसी कर रहे हैं, तो वो ऐसी इन्वायरमेंट में हो कि 3-4 घंटे के लिए वो बच्चा बहुत सुकून में हो, खुश हो, और जो भी आप उसको सिखाना चाहते हैं, मिनिमल उसको जो सिखाना चाहते हैं और फिर उसकी असेसमेंट करना चाहते हैं, उसके मुताबिक वो बच्चा चले और खेलने दें, मिट्टी में गंदा होने दें, और टीचर भी साथ सीखे. हमारे टीचर्स तो ऐसे पैदा होते हैं कि जैसे अल्लाह मियां ने उनको सहीफा दिया हुआ है कि आपको पता है, आंखें दिखा दिखा के छोटे छोटे बच्चों को बता रहे होते हैं कि टेबल बताओ, टेबल 4 का टेबल बताओ, 6 का टेबल बताओ. नहीं, बच्चे से सीखना है. आज का बच्चा जो है, they are generations different. Even the beggar on the street will be thinking very different from what you and I are thinking. What we have not discussed here is that little gadget called smartphone that every child has. We have to protect them also from that. मैंने अभी 1.5 हफ्ता पहले प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स पेका में अमेंडमेंट करवाई है, बहुत डिटेल्ड अमेंडमेंट करवाई है. सो द थिंग इज दिस दैट ये सारी चीजें हमें साथ लेके चलनी होंगी, और बिकॉज वी आर ऑल एजुकेशनिस्ट. मैंने दूसरी साइड से भी देख लिया है कि क्या होता है. वसीम साहब भी मतलब बहुत जगह जगह से, बहुत मुख्तलिफ जॉब से और पोजीशन से, रादर देन पोजीशन से होके आए, तो इनका भी सोच समझ बहुत वसी है इस मामले में. तो हमें बहुत अपने आप को वुसअत दे के, बच्चे बिल्कुल रोल प्ले करके कि आज का बच्चा क्या चाहता है. ये वो बच्चा नहीं है जो आपके डरावे में आएगा और इसका दिमाग बंद, आप बच्चे का दिमाग बंद हो जाएगा, फिर आप असेस क्या करेंगे. सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट. What are you assessing the child against? ठीक है, वो आपने पहले उसको न्यूट्रिशन देनी है, फिर उसको हैप्पी इन्वायरमेंट देनी है, फिर उसको प्ले देना है, फिर आपने उसके टीचर को बहुत अच्छे से देखना है, फिर आना है उसकी असेसमेंट की तरफ कि वो क्या किस चीज़ के अगेंस्ट उसकी असेसमेंट हो. यहाँ मैं बताना आपको चाहूँगी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 452 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और तकरीबन 2000 प्राइवेट, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं. प्राइवेट स्कूल्स को मत छोड़िए. प्राइवेट स्कूल बच्चे को पकड़ता है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो आपका काम कर रहा है, वो रियासत का काम कर रहा है जो रियासत नहीं कर सकी. वो बच्चे को पकड़ लेता है 3 साल की उम्र में, फिर वो उसके बच्चे के साथ क्या सलूक करता है हमें नहीं पता. वो छोटे छोटे कमरों में वो एक स्कूल बना होता है. सो आई एम स्टिल वेरी क्यूरियस व्हाट हैपेंस टू दोस किड्स. और वो उनको अपनी फीस चाहिए होती है और फीस के मुताबिक चलते हैं. सो द गवर्नमेंट
can play a big role now that we have inflation. Parents cannot afford to send children to school so early onwards. The government can play a very big role. And no pilots. मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरे 25 साल इन पायलट्स की नजर हो गए. फलाना पायलट प्रोजेक्ट, फलाना अर्ली चाइल्डहुड, ECCE है, ECD है, फलाना हर चीज के ऊपर कॉन्फ्रेंस. नो कॉन्फ्रेंसेस एंड नो पायलट्स. आपके एक एक पैसा बच्चे के ऊपर जाएगा, एक एक पैसा बच्चे के ऊपर जाएगा, बिल्कुल कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी. तो और पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें यहाँ पर मैं आती हूँ और इसको एक कैंपेन की सूरत में बनाएं. देखिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं, बाकी लोगों को क्या पता है कि क्या हो रहा है. सो ये कैंपेन होनी चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को अपने साथ लेके चलें. ठीक है, ये डिवॉल्व एक बेला लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बच्चा सेक्सुअली अब्यूज हुआ, पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठाई, तो वापस आवाज आई, ये बच्चा तो खैबर पख्तूनख्वा का था, ये बच्ची तो सिंध की थी, ये बच्ची तो बलूचिस्तान की थी, ओहो ये तो पंजाब में इस डोमेस्टिक वर्कर का कत्ल हुआ है. ये मैंने अगला काम जो करना है ना, ये जो 18वीं तरमीम के जरिए हमने बच्चों को डिवॉल्व कर दिया है ना, दिस एंट हैपनिंग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. पाकिस्तान का बच्चा विल रिमेन पाकिस्तान का बच्चा. And we will be, and I commend Gilgit Baltistan, छोटी जगह है, population कम है. I commend Gilgit Baltistan, I commend Baluchistan, I commend Sindh for stepping up to all those legislations. लेकिन ये है, अच्छा जोर क्या है पार्लियामेंट में, ये मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ. जोर क्या है पार्लियामेंट में? ओहो, यूनिवर्सिटीज पे यूनिवर्सिटीज के चार्टर पे चार्टर. जो मेरा वक्त रह गया पार्लियामेंट में, ले आए कोई चीज अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन के ऊपर, ताकि उसको वहां से थ्रू करा लें. और ये जो बच्चे, मैंने बहुत अहम बात की, इस पे सोचिए. आप गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे को गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा नहीं कहेंगे, आप उसको पाकिस्तान का बच्चा कहेंगे. सिंध का बच्चा पाकिस्तान का बच्चा. यू विल पुट योर फुट डाउन एंड से दीज आर पाकिस्तानी चिल्ड्रन, डोंट डिवॉल्व चिल्ड्रन, वरना रियासत ने उनकी जिम्मेदारी खत्म कर दी है. So इसके साथ I would like to be a part of this pledge कि ये जो आज pledge मुझे दी गई है, and I commend Bela Raza Jamil for being steadfast and always so energetic. अल्लाह हमें भी इन जैसी energy दे और commitment दे. तो ये जो pledge दी गई है कि early assessments हों, और उसके साथ मैं ये कहूँगी कि early provisions भी हों, and please इसमें डाल दें कि no pilot projects, बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग टू वर्क विद यू एंड व्हाटएवर लिटिल आई कैन डू. थैंक यू. Last thing, if you could announce वो जो 21 और 22 very much. एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था अपने देखो कि वोकेशनल लर्निंग और अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर इसकी एक डोर होगा कॉन्फ्रेंस जो कि प्रोविंसेस भी उसमें रिप्रेजेंटेड होंगे, डेवलपमेंट पार्टनर्स भी होंगे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी होंगे. 21 और 22 नहीं होगी. इसके अंदर हम जो है वोकेशनल लर्निंग और अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से एक एक्शन प्लान जो है वो डेवलप करेंगे प्रोविंसेस की मशावरत के साथ, ताकि उसके ऊपर अमल दरामद भी हो सके. थैंक यू. सवाल ही नहीं पैदा होता.
आएंगे और यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता पायलट का। इसीलिए हम लोगों ने सबको इकट्ठा किया है कि अगर जो भी करेंगे वो मुल्क भर में करेंगे और हर बच्चे और बच्ची के लिए करेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक सेगवे है कि इस सेशन के बाद, चाय की ब्रेक के बाद, which is well deserved, we will be sitting down and if all various people, 5 assessment tools यहाँ पे आए हुए हैं, they will make their presentation and immediately after the presentation, after lunch, we'll be sitting down to see कि कौन से common aspects हैं। और sorry, PEX से नासिर साहब आए हैं, पंजाब से ये नहीं है कि नहीं आए हुए, but we will then take the time in the next section. But it's a good time to just quickly do a fast round of introductions. कौन कहाँ है, कौन बैठा हुआ है और अपने इदारे का नाम ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Where is the mic? Is there a mic around? Please, आपके पास है, आप अपना नाम लीजिए और अपने इदारे का नाम, just so that the panelists know कि कौन कौन कहाँ से आया हुआ है and how representative we are. Thank you. करीब से बोलिएगा। Just 1 second, फिर तस्वीर खींचनी है। It's great to be with you all. This is Naveed Hussain from the department where I am of medical research. Thank you. I'm part of the I'm overlooking part of the sector. Hearing your thoughts on the movie and Education Corporation are working assessment unit and after at least one deputy director to university education. Assalamualaikum, I'm Nabil Fatima and I'm having a bachelor in Yeah, so school education part of something that. Everyone, this is Sarah Sheen and I'm the representative of PACE. And we are also the co-partner for this presentation. Assalamualaikum everyone, my name is Asim Said and I work for the NCC and the assessment board. Yes, my name is Dr. Nasir. I'm from Punjab User Mission. Work in different capacities as assessment experts and evaluation, starting assessment and research. I appreciate this is commendable that the education file and has taken on this issue on foundational learning, as it is very important that it provides the building blocks for learning. So Punjab is a full support and we will definitely implement all as well. Thank you. Assessment expert and then we will find. Assalamualaikum, my name is Aman. I'm from Science and Education Agency. I'm working as a specialist. Starting the CRP subject specialist role national assessment review. Good morning, everyone. My name is Fred Perry. I'm an education advisor at the ITA and I'm the program. जी हमारा वैसे करंटली मेरे एग्जाम
program, working as an active. Also been working as Dr. Nasreen, Joint Education Advisor. The topic of foundational literacy and numeracy is very close to me. We always learn, inshallah, I'm not going to make promise, but we will see that this gets implemented all over, inshallah. The Textual Department of Education Planning and Development, all of this. So, Saiba, Senior Education Advisor, British Language. Children and also on early childhood education. I just want to say thank you to Bela. Session. I really feel that Pakistan assessment is one of the things that there have been many assessments that have been done in Pakistan. There are a lot of tools. The issue is that how do we systematize? The importance we all know, even for started with early childhood development work that we started in Islamabad. One of the best early childhood programs that I've ever seen was implemented in Islamabad. When I hear from certain people, I really feel very sad that we really need to go and see exactly what we have been doing and now. So really important. Thank you. This is Dr. Shamma. I'm a part of the family as well, and I'm heading the Department of Education, Planning, Policy Studies, and Leadership at Alabama. Assalamualaikum, Dr. Tanvir. I have been away from education sector, and recently I came back. I must share one thing with you, that if you want to have a better search for any political influence, for any local influence. But I am so glad that today, when we have pieces like the secret, I just simply walked into his office. I showed my CV, and looking at my CV, he offered me this program. Assalamu alaikum, Muhammad Shakil, National Coordinator, PAI. Assalamu alaikum ji, my name is Saqib Farooq. I'm supporting the ministry on several national and international programs. Assalamu alaikum everyone, I am Zulfikar Ali and I am with Team ITA. Thank you. Hello ji, it's Faisal Shoaib, Director, Federal Secretary Office, Ministry of Federal Education. Thank you. Assalamu alaikum. I am Shehnaz Yusuf, currently affiliated with ITA, Islamabad.
have one great photograph. रोशनी अच्छी है, so that we can have it. So before we have a cup of tea and before people, especially our panelists, have to go, I can't thank them enough for sparing us this time. But we'll thank you so much. तो वहां पे आ जाइए, इस दरवाजा हम खोल रहे हैं ताकि सब वहां पे 2 लाइन्स में हम लोग खड़े हो जाइए. आइए, please, to the panelists. आइए, Pyaro साहब, you were great. Please. जल्दी जल्दी आप खड़ा. हाँ हाँ, खड़े खड़े आइए आइए. आई एम सो हैप्पी हमारी साउथ पंजाब भी रिप्रेजेंटेशन हो गई. थैंक यू सर. हाँ बस कह रहे हैं कि बड़ा अच्छे हैं, जरा रोशनी बड़ी अच्छी. आप आइए, वसीम साहब शहर आइए. सर ये आप ओ बस अब आ जाए. ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन. मैनाज आइए प्लीज. कैसे नहीं साहब, ग्रेट टू सी. मैनाज हियर प्लीज, सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं. डोंट वेट टू लॉन्ग. बीच में खड़े हो. जी जी आइए आइए आइए, जस्ट कीप कमिंग. लेयर में अपना खड़ा कर लेना, आपका आइडिया था बहुत अच्छा. आइए आइए आइए. We need people to move and go in front. सामने चले जाएं. क्यों तोड़ना चाह रहे हैं तुम, फिर वापस आगे आ गई. तुम इधर आओ ना, यहाँ पे. हाँ आइए ना, ये खड़े हो. वो थोड़े हो गए ना बहुत ज्यादा के.
Yes.